while if I am speaking in this way, that said, some may not like my speech. They have difference of view. They can have the tool to use the rules and to apply to you. You are the custodian of this house. Yes. Yes. Here what happened, sir? Parliamentary Affairs Minister took the entire custody of this house and he threatened virtually a lady member. We are all hearing that she didn't mention. Sir, one point. Sir, you have the power to delete, expunge, anything which we have done. You have the power. They can request you, sir. Okay. But how can a Parliamentary Affairs Minister, those who have the responsibility to maintain peace in the house, okay, to contain law in his hand and threatening a lady member? Yes. Okay. Sir, one more thing, sir. Please. I heard Mawaji. आप सदन चलाना चाहते हैं सब लोग? She didn't मैंने mention. आपकी बात सुन ली, अब आप रिपीटेशन मत करो. Sir, मेरा request, he should do an apology. Parliamentary Affairs Minister has to do an apology, or you should expunge. Sir, you should. Otherwise, you should expunge. Please. No, please. माननीय सदस्यगण, एक मिनट माननीय सदस्यगणों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, हम सबने बीएससी में डिसाइड किया था कि हम संविधान की 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर अपनी बात रखेंगे और मैंने ये अपेक्षा सदन में जब शुरुआत हुई थी तब ये अपेक्षा की थी कि हम संविधान के माध्यम से हुए परिवर्तन और उसकी स्वर्णिम यात्रा में सभी दलों के सरकार यहां रही है और सबका इस यात्रा में सहयोग रहा है. सब अपनी यात्रा में सहयोग को रखें. नीतियों पॉलिसियों में संविधान में कोई परिवर्तन हो तो उसकी चर्चा करें और सदन में बोलते समय हम जिन पर चर्चा न होकर आरोप प्रत्यारोप पर, व्यक्तिगत टिप्पणियों पर, इन पर जाने का प्रयास करते हैं जो ठीक नहीं है. और मैं एक मिनट प्लीज, आपको मैंने बोलने दिया ना, प्लीज बैठिए. नो. तो मेरी सदन से अपेक्षा है कि हम एक सकारात्मक चर्चा करें, सकारात्मक दिशा में चर्चा करें. संविधान के परिप्रेक्ष्य में जहां आलोचना करनी है तो संविधान के परिप्रेक्ष्य में जिसने संविधान में संशोधन किए उसके प्रभाव को भी करें और उससे अगर कोई प्रभाव आपको लगता है उचित नहीं रहा तो उसकी चर्चा भी करें कि संविधान में परिवर्तन, उसका प्रभाव ठीक नहीं पड़ा है. दोनों नीतियों पॉलिसियों पर चर्चा होना चाहिए. हम कई बार माननीय सदस्य व्यक्तिगत रूप से सदन के वरिष्ठ नेताओं पर व्यक्तिगत इस तरीके की चर्चा करते हैं जो सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है. मैंने माननीय सदस्य ने जो बोला है उसको आवश्यक है वह सब विषय जो आवश्यक है वो ऑथेंटिक कर दे, अपने साक्ष्य रख दे. माननीय मंत्री जी ने भी ऐसी कोई बात बोली है तो मैं उसको देखूंगा और डिलीट करूंगा निश्चित रूप से. और सदन में मैं ये अपेक्षा करूंगा सभी माननीय सदस्यों से अब संविधान की स्वर्णिम यात्रा पे चर्चा हो और अगर चर्चा में इधर उधर डाइवर्जन होगा तो मैं टोकूंगा. फिर मत बोलना कि अध्यक्ष जी टोक रहे हैं. जगदम्बा पाल जी और सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई 8 बजे तक बढ़ा दें. सहमति है जगदम्बा पाल जी? अध्यक्ष जी, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आप ने आसन पे एक व्यवस्था दी और पूरा सदन फिर आपके उस व्यवस्था के बाद इस सदन को उस संविधान की जो अपेक्षा आपने अपने सुबह प्रारंभिक उद्बोधन में कहा था कि संविधान हमारी आत्मा है और बिना संविधान के कोई भी राष्ट्र प्राय है, तो आज उस संविधान के प्रति जो आपने 2 दिन की चर्चा रखी है उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और इस संविधान के
एडॉप्शन पे 75 वर्ष के पूरे होने पे आज हम सभी को, जैसा आपने कहा, कि आरोप या प्रत्यारोप का अवसर नहीं है। इस संविधान के प्रति जितनी जिम्मेदारी सत्तारूढ़ दल की है, जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, इस संविधान के प्रति उतनी ही जिम्मेदारी प्रतिपक्ष की है और संविधान के प्रति देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। तो आज ये संविधान के प्रति केवल सरकार उत्तरदायित्व नहीं है, आज संविधान के प्रति अगर एक संवैधानिक रूप से इस सदन में हम चुन करके आए हैं तो हम सब की जिम्मेदारी है, हम सत्ता पक्ष के हैं या प्रतिपक्ष के हों, और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। और जिस तरीके से अध्यक्ष जी ने कहा, मैं समझता हूं कि संविधान दिवस जिस दिन मनाया गया उस दिन शाम को एक न्यायपालिका में गोष्ठी थी और गोष्ठी में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि संविधान हमारी और हमारी सरकार के लिए एक पवित्र ग्रंथ है, जैसे गीता है, रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहब है, कुरान है, उसके समतुल्य है। तो आज जब हम इस तरीके से इस संविधान के उस पे हम चर्चा कर रहे हैं तो आप सोचिए कि इस संविधान को बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार बैठी ड्राफ्टिंग कमेटी की 9 दिसंबर 46 को, और जब फाइनल मीटिंग हुई 26 नवंबर 49 को और 4 नवंबर 1948 को असेंबली में ड्राफ्ट प्रस्तुत हुआ, तो लगभग 2 वर्षों तक हम इस ड्राफ्ट पे डिस्कशन करते रहे, डिबेट उस समय के लोग करते रहे, और अल्टीमेटली जाकर के 26 नवंबर 1949 को हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारत का संविधान अंतिम बैठक में 284 सदस्यों के हस्ताक्षर से हुआ, जो कि आज केवल भारत का वो संविधान आज केवल भारत के लिए गवर्नेंस के लिए, भारत के लिए मार्गदर्शन नहीं कर रहा है, आज भारत के संविधान को पूरी दुनिया मानती है कि भारत का संविधान और संविधान बहुत मजबूत है। तो इसलिए आज उस संविधान के प्रति हमको अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि इस संविधान के प्रति जब मैं कहता हूं कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस संविधान के प्रति उत्तरदायित्व हैं या प्रतिपक्ष उत्तरदायित्व है, तो सबसे पहली संवैधानिक व्यवस्था के रूप में क्या जिम्मेदारी है? सबसे पहली जिम्मेदारी होगी कि हम चुन करके अगर आए हैं और जहां पे हम संविधान के अंतर्गत चाहे पीस ऑफ लेजिस्लेशन बनाते हों, कानून बनाते हों, चाहे विधेयक पर चर्चा करते हों या क्वेश्चन आवर 0 आवर के माध्यम से या अन्य विषयों के माध्यम से हम देश की ज्वलन समस्याओं पे चर्चा करते हैं, ये हमारा एक संवैधानिक दायित्व है। और इस संवैधानिक दायित्व में क्या है? ये कर्तव्य है कि हम सदन में हर समय उपस्थित रहें, सदन के सत्र में भाग लें। लेकिन आज जो सदन के संविधान की बात करते हैं, संविधान के आरक्षण की बात करते हैं, मैं देखता हूं कि जब सत्र चल रहा है तो सदन में उपस्थित रहने के बजाय कभी हाथरस जा रहे हैं, कभी संभल जा रहे हैं। ये कितना संवैधानिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, कदाचित पूरा देश देख रहा है कि शायद ये संविधान की, क्योंकि अगर क्या जिम्मेदारी है हमारा क्या दायित्व है, हम इस संविधान के प्रति नहीं। अगर ये बात मैं कहता हूं तो इसलिए कहता हूं कि अगर मैं चुन करके आया हूं, इस संविधान के प्रति मेरे मन में सम्मान है, तो मैं 100% उपस्थित रहने का काम करता हूं और इस सदन में। और जहां तक आप संविधान में बात हमारे साथियों ने कही, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। आखिर संविधान में एक तरफ अगर आप कहें कि आरक्षण खत्म करने की बात, संविधान बदलने की बात, तो मैं पूछना चाहता हूं कि संविधान में अगर आस्था है, संविधान में मर्यादा है, तो आज जब सरकार थी उस समय, तो उस संविधान की से चुनी हुई सरकार के द्वारा पारित किए गए विधेयक को अगर उस विधेयक को उस सत्तारूढ़ दल के नेता के द्वारा ही उस विधेयक को फाड़ दिया जाए, तो यह संविधान के प्रति सम्मान है या संविधान के प्रति अपमान है? मुझे विश्वास नहीं है कि आखिर अगर आप पूरे देश को जिस तरह से चुनाव में गुमराह आपने करना चाहा कि हम
आरक्षण को लागू नहीं करना चाहते हैं, आरक्षण को समाप्त करेंगे और हम सरकार में आ जाएंगे। आखिर इस संविधान में जो आरक्षण है, जब आरक्षण समाप्त हो रहा था उस समय दिसंबर 12, 2019 को अगर शायद केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं होती तो SC ST का जो रिजर्वेशन था वो समाप्त हो जाता। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिसंबर 12, 2019 को ST ST का रिजर्वेशन लाया गया और जनवरी 25, 2020 को उस SC ST के रिजर्वेशन को 2030 तक बढ़ाने का काम किया है। तो आज आरक्षण देने का काम हम कर रहे हैं। आप बात करेंगे किसने आरक्षण दिया? 2030 तक इस देश के अगर दलितों को, मजलूमों को, गरीबों को, SC ST को 2030 तक का आरक्षण बढ़ा है तो वो 2030 तक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार ने बढ़ाने का काम किया। आप कहते हैं बैकवर्ड की बात। आखिर देश की आजादी के बाद से उस जिस बैकवर्ड की बात करते हैं, जिस चुनाव में बैकवर्ड की दुहाई देते हैं, आखिर उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किसने दिया? उस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का काम आजादी के बाद देश में पहली बार नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को अगर कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक दर्जा दिया तो वो भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया और हमारी सरकार ने दिया। वो आप याद करिए, अगस्त 11, 2018 को हम लोगों ने उस बिल को प्रस्तुत किया और अगस्त 2018 में फिर वो इफेक्ट में आया। और आप कहते हैं आज चिंता अगर बैकवर्ड्स की है देश में, आज पिछड़ों की चिंता है, दलितों की चिंता है, तो उस चिंता को न केवल चिंता है बल्कि कानून बना करके उनके आरक्षण, उनके अधिकारों की रक्षा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और इसी तरह से नहीं, पहली बार आजादी के बाद मैं आपसे कहना चाहूं कि जो हमारा 103वां 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 में हुआ, मैं पूछना चाहता हूं कि उस अमेंडमेंट में आप भी मौजूद थे, बैठे थे बहुत से साथी, आपने भाग लिया। आपने देखा कि मांग तो आजादी के बाद से लगातार उठ रही थी कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस हैं वो आर्थिक रूप से किसी भी जाति के हों या किसी हों, लेकिन अगर वो कमजोर हैं या हमारे वीकर सेक्शन से आते हैं तो पहली बार आजादी के बाद देश के करोड़ों करोड़ लोगों को हमने शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन दिया, हमने बैकवर्ड का दिया, लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जो ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, राय में, भूमियार में या किसी भी जात बिरादरी में जो आर्थिक रूप से इतने कमजोर थे कि उनको आरक्षण का कोई लाभ नहीं था, उसे भी 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हमारी सरकार ने 10% रिजर्वेशन EWS में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को देने का काम किया। तो आप बात करते हैं, लगातार पिछले 10 वर्षों में जब से सरकार आई है हमने लगातार हर वर्ग की चिंता किया। आप प्रियम्बल की बात करते हैं, प्रियम्बल में क्या है? अगर सोशलिज्म की बात करते हैं तो समाजवाद किस चीज पे आधारित है? समाजवाद इक्वलिटी पे आधारित है। आप अगर इक्वलिटी की बात करते हैं समाजवाद में तब जस्टिस है, तो उस जस्टिस इक्वलिटी को किसने पूरा करने का काम किया? आपने देखा, जैसा मैंने उल्लेख किया कि जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया इनको। आप देखते हैं कि आर्टिकल 370 एंड 35A को जो एक भारत माता के माथे पे कलंक लगा हुआ था, इस भारत की लोकसभा से पारित किए हुए कानून, भारत के सैकड़ों कानून जम्मू कश्मीर की धरती पे नहीं लागू होते थे। आरक्षण का कानून वहां नहीं लागू होता था, तमाम हमारी स्कीम्स आवास नहीं लागू होते थे और तमाम कानून जो था वो आर्टिकल 370 जो एक अस्थायी उस सरकार के द्वारा लगाया गया था 35A, उसके नाते भारत की पार्लियामेंट के कानून भी जम्मू कश्मीर की धरती में नहीं लागू होते। वो भी 2019 में 5 अगस्त को यही गवाह है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A को प्रस्तुत किया और आज पूरे देश ने देखा कि अब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो गया है और भारत की पार्लियामेंट के बनाए हुए सारे कानून अब उस जम्मू कश्मीर लागू है। आप संविधान की बात करते हैं, शायद पहली बार जम्मू कश्मीर में आजादी के बाद संविधान दिवस मनाने का काम हुआ है, तो इस समय हुआ है जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आप बात करते हैं
महिलाओं की बात करते हैं, विमेंस की बात करते हैं। आखिर जिस तरीके की नारकी जीवन थी, टेलीफोन पे अगर रोटी कच्ची रह गई या कुछ रह गया घर में, मुंह से 3 तलाक निकल गया तो जिंदगी भर के लिए वो हमारी बहन बेटी सड़क पे आ जाती थी किसी छोटी सी गलती पे। इस तरीके से आज वो जो एक पूरे देश में लोगों को लगा, देश की आजादी 1947 में आई, लेकिन जिस तरीके से अल्पसंख्यक महिलाओं को उस ट्रिपल तलाक के उस नारकी जीवन से छुटकारा मिला तो 31 जुलाई 2019 को मिला, जब भारत की उन महिलाओं ने एक खुली हवा में सांस लिया कि उनके भी अधिकार हैं। मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड मैरिज एक्ट 2019। आखिर ये हम अगर इक्वलिटी और जस्टिस की बात नहीं करते तो हमें क्यों चिंता होती? इसका मतलब है कि जो बात हमारे साथियों ने कहा कि हम सबका साथ सबका विकास की बात नहीं करते, सबके लिए हम कानून का प्रावधान करते हैं। आज आप बात करते हैं हमारे लगातार अभी तक यूसीसी की बात हो रही थी। आखिर यूसीसी की चर्चा संविधान सभा से लेकर के आज 2024 तक इस पे बहस हो रही है। आखिर इस पे विपक्ष का क्या स्टैंड है? आखिर आप बताइए कि क्या ये संहिता या ये कानून केवल कानून का विषय है या यूसीसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के बाद ये समानता और न्याय की भावना को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। और मैं कहने हैं या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मानते हैं, अगर आप देखिए, मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहस की बात कर रहा हूं। जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तब समान नागरिक संहिता का विचार उस समय के भी संविधान निर्माताओं ने कल्पना की। आज ये नहीं है, आज वो आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, नीति निर्देशक तत्वों में है। और वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उस पे क्या कहा था? डॉक्टर BR अंबेडकर ने कहा था, मैं कोट कर रहा हूं, ये जगदम्बिका पाल नहीं कह रहे, हमारी पार्टी हमारी सरकार नहीं कह रही, ये डॉक्टर BR अंबेडकर ने कहा, समान नागरिक संहिता देश की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है। इसका उद्देश्य नहीं है कि किसी की धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित किया जाए, बल्कि समाज में समानता लाई जाए। तो अगर आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए हम यूसीसी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर में आपकी आस्था है तो निश्चित तौर से आज इक्वलिटी और जस्टिस के लिए यूसीसी पास होना बहुत ही जरूरी है इस देश के लिए। मैं पूछना चाहता हूं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में श्री KM मुंशी ने क्या कहा था? उस हमारे जो संवैधानिक निर्माताओं ने जब चर्चा की तो उसमें भी उन्होंने संविधान सभा में कहा था KM मुंशी जी ने कि समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देगी, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति कानून सामुदायिक विभाजन को प्रोत्साहित करते हैं। ये बात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो लोग जिन्होंने संविधान निर्माता हैं, ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि जिसने भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को कमजोर किया है, तो आज उस समान नागरिक संहिता जिसकी बात आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसको लाने की बात हो रही है, आज उसकी बात बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था, उसके सपनों को हम साकार करने जा रहे हैं कि मुंशी जी के सपनों को साकार करने। आखिर मुंशी जी ने उस समय भी ये कहा था कि चाहे ऐसे तमाम अल्पसंख्यक देश हैं, मुस्लिम देश हैं, चाहे टर्की है, इजिप्ट है, ऐसे तमाम देश हैं जहां उन मुस्लिम बहुल देशों में विभिन्न समूहों के लिए व्यक्तिगत कानून के बिना यूनिफॉर्म कोड को सफलतापूर्वक लागू किया गया। अगर तमाम इस्लामिक कंट्री में इस तरह का कानून है तो हम क्यों नहीं कर सकते? जबकि वो इस्लामिक कंट्री, उसमें संकेत मिलता है कि आखिर अगर आज भारत को आधुनिक की दिशा में बढ़ना है, और ये बात मैं डिबेट का एक कोट पढ़ दे रहा हूं KM मुंशी का, ए फर्दर आर्गुमेंट हैज बीन एडवांस्ड दैट द इनैक्टमेंट ऑफ ए सिविल कोड वुड बी टाइनिकल टू माइनॉरिटी। इज इट टाइनिकल? Nowhere in advanced Muslim country, the personal of each minority has been recognized as so sacrosanct as to prevent the enactment of civil code. Take for instance Turkey or Egypt. No minority in these countries is permitted to have such rights. But I go further. When the Shariat Act was passed,
or when certain laws were passed in the central legislative in the old regime, the Khojaj and Kuchi amendments were highly disrespected. तो अगर इस तरह की कंट्रीज में मैं कहता हूं, नहीं आप इसका निश्चित तौर से, दिस इज कोर्ट एंड इट इज पार्ट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली विच वाज डिलीवर्ड बाय श्री के एम मुंशी जी। तो आज उस मैं कह रहा हूं कि उस नागरिक समान नागरिक संहिता की बात को उस समय संविधान के अनुच्छेद 44 में रख दिया गया और संविधान के अनुच्छेद 44 में उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रखा। आज फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, लेकिन क्या आजादी के बाद अगर नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये जो बनाने वाले लोग हैं, चाहे उसमें हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी कहा था, उन्होंने कहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान सभा में कहा था, अगर हम समान नागरिक संहिता की ओर नहीं बढ़ते, अगर हम समान नागरिक संहिता की ओर नहीं बढ़ते तो हम न्याय और समानता की नींव पर खड़े अपने लोकतंत्र को कमजोर करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, देश में एक कानून होना हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक होगा। तो अगर आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं तो ये हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर रहे हैं। Please be seated. दादा, you are well aware. You have gone through the Constituent Assembly speeches. I think so. You will endorse me. ऐसा थोड़ी दादा, तुम्ही की डॉक छे तो मैं दादा तो मैं एक बात कहना चाहता कि आज चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हों, वल्लभ भाई पटेल जी हों, के एम मुंशी जी हों, आज जो ये आर्टिकल 44 है जिसमें अभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, आज जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आज पहली बार देश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का सपना उन्होंने कहा कि हमारे उन निर्माताओं ने, संविधान निर्माताओं ने देखा तो हम सबको बुनियादी सुविधाएं देंगे। और आज पूरे देश में उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में चाहे लोगों को आवास देना हो, चाहे लोगों के 18,000 गांव में विद्युत पहुंचाने का काम हो, अपार्ट फ्रॉम कास्ट, क्रीड, रिलीजन, ये पहली सरकार है। अगर चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देती है तो ये नहीं कि कौन किस जाति का है, कौन किस बिरादरी का है। आवास अगर दे, आयुष्मान कार्ड दे रही है तो अगर हिंदू को मिल रहा है, अल्पसंख्यक को भी, दलित को भी, पिछड़ों को, तो ये समान नागरिक संहिता को हम लागू कर रहे हैं। और आज हमारी सरकार एक चीजों में नहीं, आप बुनियादी रूप से देखिए कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी लोगों के सर पे पक्की छत नहीं था, आजादी के वर्षों के बाद भी लोगों के घरों में शौचालय नहीं था, आजादी के वर्षों के बाद भी दवाई की कोई गारंटी नहीं थी। दवाई और पढ़ाई की गारंटी न हो, ऐसी कौन सी सरकार हो? ये पहली सरकार है जिसने दवाई और पढ़ाई की गारंटी देने का काम किया है देश के लोगों के सामने। तो आज जिस तरीके से जब हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अपने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कहा था, उस समय ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 44 नहीं था, उस समय ड्राफ्ट आर्टिकल 35 था, जो हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो प्रोविजन था वो ड्राफ्ट आर्टिकल में 35 था। और उस पर नवंबर 4, 1948 को डॉक्टर अंबेडकर जी ने उसकी वकालत किया। फिर नवंबर 23, 1948 को उस पर डिबेट हुआ और वोट हुआ उसी आर्टिकल 35 पे, और डॉक्टर अंबेडकर, के एम मुंशी, एलादी कृष्णा स्वामी, इन तमाम लोगों ने उसमें भाग लिया और सब ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के लिए बहुत आवश्यक है। आज तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, उनको जवाब देना होगा। वो इसलिए नहीं किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस का फैसला किया तो ये तुष्टीकरण की राजनीति में उस शाहबानो केस के फैसले को बदल दिया और यहां पे बिल ला करके ये बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ये बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की। इनको देश की समानता, ये वो कहेंगे कि देश की परिसंपत्तियों पे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, वो कभी इक्वलिटी की बात कर सकते हैं, वो कभी जस्टिस की बात कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अभी तो मैंने शुरू किया मानव, अभी तो मैंने शुरू किया है। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत क्यों पड़ी है? जरूरत इसलिए पड़ी कि जरूरत इसलिए पड़ी मानव
कानून के सामने इसलिए जरूरत है यूसीसी की कि एक समानता होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। आज वर्तमान में सभी के अलग अलग हैं। आप मान्यवर ऐसे 14-15 कानून हैं कि जो आप देखेंगे कि अगर ये नहीं हुआ तो आप सोचिए कि इसको हम कब करेंगे। और हम दो चीज़ों पे मानते हैं कि एक तो जो अमेंडमेंट हुए वो क्वालिटेटिव अमेंडमेंट है, गुणवत्तापरक है, या क्वांटिटेटिव है। बस फर्क क्या है कि हमारी सरकार ने जो भी अमेंडमेंट्स किए, मैंने कुछ अमेंडमेंट्स का उल्लेख किया, लेकिन जितने भी अमेंडमेंट्स हुए वो इस देश के हित में था, इस देश के लोगों के हित में था। और इनके जमाने में भी अमेंडमेंट हुआ। आपको याद होगा 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 42वां संशोधन हुआ था जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे थे, उसमें अब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ। और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपने किया, ये पहली बार हुआ होगा कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया इस पार्लियामेंट से, लेकिन देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके कई प्रोविजन को कहा ये अनडेमोक्रेटिक है और इसको नहीं स्वीकार करेंगे। ये आखिर सरकार के लिए क्या था? तो इसका मतलब है कि उस समय सरकार अगर अमेंडमेंट करती थी, अरे मैं इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूं और मैं तमाम चीजों की बात नहीं कर, मैं तो केवल वो बात कह रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि इसके प्रोविजंस जो हैं वो जजमेंट दिया उन्होंने स्पष्ट तौर से। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं सर जी, काइंडली इस तरीके से सर जी हमारे फैसले कंक्लूड कीजिएगा। आज आप देखिए, कृपया अभी तक एक कॉलोनियल हमारे कानून चले आ रहे थे। अगर हमने 3 नए कानून बनाए तो भारतीय न्याय पहले क्या था, वही इंडियन पेनल कोड, तब दंड देने के लिए था। आजादी के बाद से चिंता नहीं थी कि आम जनता को न्याय मिल सके, वही भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी, और आज हमने उसकी जगह पे दंड देने की जगह पे न्याय देने के 3-3 कानून बनाने का काम हमारी मंत्री ने किया। भारतीय न्याय संहिता हो, बीएनएस हो, उसको हमने इंडियन पेनल कोड से रिप्लेस किया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो, उसको सीआरपीसी से रिप्लेस किया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए हो, उसको इंडियन एविडेंस एक्ट से हमने रिप्लेस किया। तो इस तरीके से जो हमने किया, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आज हम जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी सरकार की जो स्पिरिट है, आज इस पर जो चर्चा हो रही, जो डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कि डीप रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, not just for its form but it's a substance, not just it's a letter but it's a spirit, and constitutional morality is essential for effective governance and social progress। तो ये टोटलिटी में, हम टोटलिटी में इसको स्पिरिट में भी और उसको हमारी सरकार ले रही, और आज उसी का नतीजा है कि अब बस दो मिनट में और समाप्त करेंगे मानव। तो इस तरीके से मैं आपसे कह रहा था कि आज जो भी आज इस संविधान पे चर्चा हो रही है, इस संविधान पे चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि मान्यवर 2 साल हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किया। आज कम से कम 2 दिन तो ये चर्चा कर लें, ये महसूस कर लें कि केवल संविधान की पुस्तक लेके काम नहीं होगा, कि उस संविधान की पुस्तक दिखाने का काम करें, उस संविधान को अंगीकार करने का काम करें, कम से कम उस संविधान के उसको अमल करने का काम करें। आखिर कौन सी संवैधानिक ढांचा, आप देखें, आज आप देखिए इस संविधान पे आज जो भी, अगर मैं 1-2 उदाहरण दूं तो शायद बहुत हो जाएगा, लेकिन उस 2 साल में जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुआ था और उस डिबेट में जो निकल करके आया, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको, जो आपने मुझे इतना समय दिया, मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद सर। माइक, थैंक यू सर। प्लीज गो अहेड। स्पीकर साहब, श्री मालाविंदर सिंह। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ,
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਨਮਨ ਕਰਦਾ। ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰੇਕ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਣਗਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਉਲਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤੇ 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੈਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਉਲਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਵੱਜੀ ਆ। ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਸੈਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਆ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ, ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਸਰ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਕੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟਾਤੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੇਸ਼-ਭੂਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਭਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਰ ਯੂਪੀ 'ਚ ਇੱਕ IPS ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਵੱਜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੇ ਆਪਣਾ ਪੀਸਫੁਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 150 ਕਰੋੜ ਚੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੌਣ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੂਗਾ ਸਰ? ਇਹ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ
ਉਹਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਨਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹਰੇਕ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ जिस तरीके नाल कम्यूनल और धार्मिक भावनावां भड़काउण वाला भाषण एक ऑनरेबल जज देंगे फिर जुडिशरी दी इंडिपेंडेंस मजबूत नहीं हो सकती सर मैं बस लास्ट ही है मेरी सर तुहाडे राही भारत सरकार नूं बेनती है अज टाइम से अज समा सी अज 75 साल बाद असी आत्म पड़चोल कर रहे हैं ये देखना पऊगा पंजाब वर्गा सूबा जिन्हें सब तो वध कुर्बानियां दित्तियां ते सब तो वध मुश्किलां चलियां सर देश की आजादी सब तो वध नुकसान होया पंजाब ते वैस्ट बंगाल दा होया उस पंजाब नूं ओदी अपनी राजधानी जिहड़ी आ अज दित्ती नहीं जा रही इस हद तक साडे नाल डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है सर इस ते पहरा देण दी लोड़ है इस ते विचार करन दी लोड़ है भारत सरकार नूं धर्म के आधार ते जात के आधार ते लोकां नूं वंडण पाउण दी बजाय जिहड़ा साडा कॉन्स्टिट्यूशन है जिहड़ा साडा संविधान है ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਭੇਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਣੀਪੁਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹਰ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ ਸਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ बैठिएगा धन्यवाद So thank you, Honorable Speaker. I would like to extend my heartfelt gratitude to my party as well as the Honorable Speaker for giving me an opportunity to take part in this historical discussion. Sir, Dr. B.R. Ambedkar, the chairman of the drafting committee, was a prime believer in social justice and therefore believed that the interest of all sections of the society were to be protected through the Constitution. Dr. B.R. Ambedkar said, however, I quote, however good a constitution may be, if those who are implementing it are not good, it will prove bad. Sir, we are taking part in this historical discussion not just because we are celebrating 75 years of the Constitution, but also we truly understand the facts that Constitution is in danger. Our Samvidhan khatre mein hai. That is the sole reason. Like Dr. Ambedkar said, we have to be very cautious when we are completing 75 years of a constitution. Sir, the Indian National Congress has always been committed to the idea of the constitution. It must be noted that the Purna Swaraj was passed in 1929 during the Lahore session of the Indian National Congress, which was presided over by Pandit Jawaharlal Nehru, who paved the way and laid the foundation of the constitution. Sir, in June 1934, the Indian National Congress for the first time and formally and officially demanded an Indian Constituent Assembly for framing the Constitution of India. Accordingly, the movement towards framing the Constitution of independent India was conceptualized and initiated by the Congress Party. Sir, it was Pandit Jawaharlal Nehru who invited Dr. Ambedkar as a law minister. And after 2 weeks, when he became the law minister, he was assigned, he was requested to be the chairman of the drafting committee, sir. Sir, he had differences of opinion. Dr. Ambedkar had differences of opinion with the Congress, but he very clearly said that in spite of the differences, there has been multiple oppositions, debates in the Constituent Assembly over 2.5 years. Many things were voted in for, against, where Mahatma Gandhi, Pandit Nehru, both were on different sides. Dr. Ambedkar were on different sides. But sir, that is the beauty of the Constitution of India. That is the grace of the Constitution of India, I would like to say. Sir, where was RSS and BJP at this time, sir? Sir, while RSS had no contribution in the constitution making exercise, it has always been a major critic of the ideas opposed by the
by Dr. Ambedkar. The RSS always advocate for the enactment of Manusmriti in India so that the caste and the class-based difference can continue to exist in India. Sir, the official mouthpiece of the RSS, the organizer, I quote, on November 30th, 1949, 3 days of the Constitution being adopted, the RSS mouthpiece organizer came out with the editorial which said, the worst thing about the new Constitution of Bharat is that there is no Bharatiya about it. There is no trace of ancient Bharatiya constitution laws, institutions, nomenclatures, phraseologies in it. Manu's laws were written before the Lycurgus of Sparta, of Solon of Persia. To this days, laws as communicated in Manusmriti excite the administration of the world and elicit spontaneous obedience and conformity, but our constitutional pundits, that means nothing. Sir, this is quoted in organizer, sir. Sir, this is the official version of the RSS and Sangha Parivar in India. Sir, in the book Bunch of Thoughts, RSS second chief M.S. Goldwalker elaborated on what they call the Constitution. I quote, our Constitution too is just a cumbersome and heterogeneous piecing together of various articles from the Constitution of Western countries. It has absolutely nothing which can be called on our own. Is there a single word of reference in guiding principle as to the national mission and whatever keynote of life is? Some lame principle from the United Nations Charter and Charter of the non-defunct League of Nations and some features from the American and British constitutions have been brought together in a mere hodgepodge. In other words, there is no reflection of Indian percepts and political philosophy of the Indian Constitution. Sir, this is the official version of the RSS, which has come out long back when the Constitution was framed in the official mouthpiece of the RSS, sir. Who can deny this, sir? Kindly sir, conclude, many please. people have... Kindly conclude. Yes. Sir, sir? Sir, I've just started, sir. What is this conclusion? Sir, the beauty of our Constitution is, sir, like Rajnath Singh ji said, there were 15 women in the Constituent Assembly. Sir, 3 women were from Kerala, sir. Sir, Ammu Swaminathan, Annie Maskreen, Dakshayani Velayathan. Sir, Dakshayani Velayathan hails from a constituency in a very small village in an island called Molavugad. And she was the first graduate in the country from the Dalit community. And we are proud to say that somebody like Dakshayani Velayathan, when they are in the Constituent Assembly, on the other hand, in 2020, we have Hathras, sir, in Republic India. We have Hathras, where a Dalit woman was killed, raped and burnt, sir. This is the new India, sir. This is the new India of the BJP Sarkar. Sir, in the last session, in the 17th Lok Sabha, in the 126th amendment, sir, in the 126th constitutional amendment, there have been many constitutional amendments according to times, according to the change in the society. The constitution need to be amended according to times, technology, etc. But sir, the 126th amendment was for extending the scheduled caste, scheduled tribe reservation. Sir, when these people, BJP, come to Kerala, they say to the Christian minority community that we are with you. Sir, we had 2 members of parliament in this August House, 2 Anglo-Indian members. Sir, like I said, like these women, there was one priest whose name is Father Jerome D'Souza. He was from the Anglo-Indian community, sir. That Anglo-Indian community reservation to 10 assemblies, 10 MLAs and 2 members of parliament has been scrapped by this BJP. I am asking the Honorable Prime Minister, will he bring back the Anglo-Indian reservation, Anglo-Indian MPs to this parliament, back to this parliament, sir? I urge... Sir, मेरा मौका है, sir. Please sit down. Sir, Kindly conclude. sir, frame गया था, sir. एक और बार बोलना है, sir. Sir, I urge the government of India, whether they will bring back the Anglo-Indian reservation, who fought the freedom struggle,
who were part of the Constituent Assembly, who are microscopic minority who can win an election, they were given the reservation in the Indian Parliament, sir, which was scrapped, sir. Sir, I am concluding. Sir, the Prime Minister of this country has time for Kapoor, but no time for Manipur, sir. Sir, क्या है sir ये? This country डबल इंजन सरकार चल रहा है सर. मणिपुर में भी बीजेपी, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बीजेपी. माननीय श्री E.T. मोहम्मद बशीर जी. Hundreds of people have lost their lives, sir. Sir, hundreds of people have lost their lives. Nothing has been taken care of. माननीय E.T. From the मोहम्मद first बशीर जी. amendment, sir, I am concluding. Sir, from the first amendment. Sit down. Please 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 sit down. Give the mic. Yes. Sir, the first amendment was by Dr. Ambedkar for the special provisions of the SC/ST. The 46th amendment was to include socialism and secularism by Srimati Indira Gandhi to the constitution. Secular fabric of this country has to be protected, sir. It is included in the preamble. Sir, constitutional amendments were for Manrega, NRHM, recognition of forest rights, right to education, right to compensation of land acquisition, LARA Act, right to street vendors Act, and it goes on, sir. Sir, this is माननीय श्री E.T. मोहम्मद बशीर जी. Yes, sir. Yes, sir. Please go ahead, sir. Sir. Yes, sir. Please go ahead, sir. I'll conclude with the quote. Conclude with the quote, sir. Please go ahead, sir. Please My go ahead. time can you be compensated, sir? My time is missing. My time may kindly be compensated. I will give you time, That's sir. all. I cannot speak now. Let him complete. Yes, sir. Please be seated, sir. Conclude, sir. 30 seconds. 30 seconds. 30 seconds. Please be seated. Please be seated. Sir, I am concluding with the quote 1 second. of Pandit Jawaharlal Nehru, sir. We shall face all other disagreeable things and face in the present or may do in the future. And we shall not flinch, and we shall not flatter, and we shall not quit, sir. This is the Constitution of India, sir. Thank you. Sir, Please go ahead, sir. sir. Yes, sir. Thank you very much, sir, giving me this opportunity to participate in this historic session. Sir, I also begin with the words of Dr. Ambedkar. Dr. Ambedkar stood for morality in politics. My learned friend, Mr. Ebiran, just quoted a part of it. I would like to complete it. Sir, Dr. Ambedkar said, I quote, I feel, however, a good constitution may be, it is sure to turn out bad because who are called to work, it happened to be a bad lot. Sir, he continued, however bad a constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it happen to be good. It's so nice, sir. It's having its farsightedness. Now, sir, what exactly is the beauty of Indian Constitution? Sir, Abul Kalam Azad, he had a dream. What exactly is? I will write a quote. India is a cultural unity amidst diversity. It is like a bouquet of flowers with various colors, and each add to the beauty of the whole. The farsightedness we can very well understand. Sir, now what exactly is happening? I don't know what to do. There are two arms of Indian Constitution that are secularism and inclusiveness. If we do a threadbare analysis of Indian Constitution on justice, it depends upon liberty, equality and fraternity. We are now very sad to say that things are going in the opposite direction. This country is totally worried about that, sir. So what we can discuss is constitutional right. Constitutional right to minorities. So Article 14, Article 25, Article 29(1), Article 29(2), Article 30 and Article 347, all these clauses are pertaining with the right of the minority to the Constitution. Sir, what is happening?
all these rights are curtailed. Things are going in an opposite direction. I would like to say that our forefathers had a dream. This government is spoiling the entire thing, sir. Sir, if anybody asks, what exactly is the saddest day as far as the secular India is concerned, we can say only one thing, sir. That is December 6, 1992, on which demolition of Babri Masjid took place. Sir, Babri Masjid was demolished under the leadership of right-wing forces. Sir, let me just. Sir. On that day, sir, on that day, on that day, what happened? Those who demolished that Babri Masjid, they shouted a slogan. What exactly is that? ये तो केवल जानती है, काशी मदर बाकी है. So those demolished Babri Masjid is traveling through the same path. We have to realize, sir. Archaeological survey now, they are playing another trick. What they are saying? They have listed 172 places like that, worship places. They are also going in that direction. They are also creating that kind of confusion in this system, sir. It is, we can very well understand. Government, if government is having a determination, things will not go in that direction. At the same time, government is also really spoiling the things. This 1991 Worship Act, we all know that. Allahabad High Court gave a direction judgment. It went for appeal. Sir, when it went for appeal, that order was nullified. And they have given a clear direction. I would like to say, sir, it is like a silver line in the clouds. We can be proud of the judgment. That is one thing I want to say, sir. All those who are going to this kind of survey and things like that. And not only, sir, the survey people, when they went to mosque, that Chambal mosque, they were also shouting the slogan, what? Hey, Sri Ram. So shouting the slogan, the vendor, sir. So then 5 people were dead, shooted. For what, sir? Innocent people. They encroached the mosque, shouting the slogans. Again, this poor devotees there, they were put to this kind of harassment. So that is, sir, beside all these things, we can very well understand something more, sir. What is that? It's not hooliganism by instruction. Government itself is involved in this kind of thing, sir. What is this? Sir, I am asking a simple question. If fence itself is spoiling the crop, who will say this kind of thing, sir? Fence is for protection. If fence itself is eating protection, who will save this country, sir? May God save this country, sir. Things are going on in a different way. I want to say, mob lynching, it has become a regular phenomenon, sir. Bulldozing the houses and shops of the minorities, that also is there, sir. Hate speeches are spreading in the country, sir. Making as a communal color, new law registrations are made, sir. In different states, this kind of things are going on, sir. Social and economical marginalization of the minorities, that also happening, sir. Sir, we have to realize. Sir, kindly if we are conclude, not making an end to this kind of thing, kindly conclude, this country will be, yeah, no, sir, some more, just 2, 3, I know, sir, there was some time with that. Sir, minorities, we have to realize, you should not ignore it. Sir, Pandit Jawaharlal Nehru, Mahatma Ji, I quote them also, sir. Mahatma Ji said, what is that? Say a civilization. Gandhiji said, a civilization can be judged by way of it treats the minorities. How you are treating the minorities, that is the criteria for the judging a country's prestige. Similarly, Pandit Jawaharlal Nehru said, the real test of democracy is the ability of even the weakest minority feel secure and confident. All these things. So, Gandhiji had a dream, but Jawaharlal Nehru had a dream. Unfortunately, this country is going into different direction. Sir, this is the era of political blindness. They are not believing in peace and cordiality.
That is it. Thank you, sir. Then, sir, I will just come one or two more points. Coming to the judiciary, sir, nobility, credibility, independence of the court is a marvelous thing. If that is wounded, we can very well know the consequences which is going to that. Sir, towards the end, that two more things. One is with regard to Manipur. Manipur is still burning, sir. Prime Minister has said to my friend, Prime Minister has not gone there. He has travelled throughout the world, but he is not going to find out the reality though, sir. That is the thing. Sir, we talk about the inclusiveness. One more, sir. Inclusiveness for what, sir? In our society, the most neglected section is physically handicapped. I know handicapped, it is dumb, differently able. They are not getting justice, sir. They are still marginalized. Thank you. I happily appeal the government to take very serious steps for the welfare. Thank you, sir. Thank you, sir. Please go ahead, madam. Madam, please go ahead. Thank you, sir. Sir, at the onset, I would like to thank you for having given me the opportunity to take part in this historical discussion on the 75 years journey of our Indian Constitution, sir. I deem it a great honor and privilege to be partaking in this discussion today, and it would be our bounden duty to be paying our respects to the framers of our Constitution, one of the tallest statesmen of our country, Dr. Babasaheb Bhimrao Ambedkar ji, who had actually chaired the drafting committee, and also the 389 members of the Constituent Assembly who had contributed to the framing of our Constitution. And besides them, sir, also Shri B.N. Rao ji, who was the Constitutional Advisor at that point of a time, and Shri S.N. Mukherjee, who was the Chief Draftsman of our Constitution too, sir. Sir, it is pertinent here to draw the attention of the respected House to the observations made by Professor Tom Ginsburg, who was a professor at the University of Chicago. And he had studied very closely and analyzed 200 constitutions across the world that were adopted after 1798. And he had categorically mentioned that the relevance of these constitutions were for a period of 17 years. And when we look around our country and take into consideration the countries around our own, we will realize that Sri Lanka had replaced its constitution thrice, Pakistan had replaced it 6 times, and Nepal had replaced it 5 times, sir. But we have a great constitution which had withstood the time and had completed 75 years, sir. And therefore, on behalf of the 140 crore Indians, I would like to thank the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for having declared November 26th as the Constitutional Day, which is but a befitting tribute to the framers of our Constitution. Sir, ours is recognized to be the second oldest constitution and also perceived to be one of the longest detailed documents, sir, which also encompasses the pluralistic values of our country. Sir, we need to realize here that this is simply not a legal document, but it seeks to provide, it's a moral guide which seeks to provide equal rights and opportunities to all the citizens of our country. Sir, the outstanding feature of our Constitution is the balance that it displays between adaptability and rigidity, sir. I say adaptability because it had withstood 106 amendments, it had subsumed 106 amendments, sir. And I would say rigidity because it has not lost, it has not compromised with the core values at all. Sir, I would here like to quote the words of Babasaheb Ambedkar when he said, "The Constitution is not a mere lawyer's document, and its spirit is always the spirit of the age." This reflects the strength of our Constitution, sir. Sir, the appreciable aspect of our Constitution too is that it simply does not seek to right the wrong that was done to many sections of our society, but it also seeks to address the challenges of an evolving modern society. Sir, many of the Western democracies have shirked away or rather shied away from giving the women in their country equal rights right until the 1960s. But sir, it was our Constitution that gave the women of our country equal rights
even as equal voting rights, even as early as 1949. And sir, this might have been a revolutionary decision at that point of a time. Sir, it simply not gives the women equal voting right, but it also ensures equality to the women and protects them from discrimination, which is reflected in the various articles of our constitution. For example, Article 14 ensures equality before law and equal protection of laws. Article 15 prohibits discrimination by any state on gender basis. Article 16 ensures equality of opportunity in employment. Article 39D ensures equal pay for equal work. Article 42 directs the states to provide humane working conditions, maternity relief, and there are many more articles, sir. The reason why I am quoting these articles here today is that these various articles have been made possible and have found their way into the Constitution of India because of the great work done by 15 wonderful, great and brave women of the Constituent Assembly. Sir, I would like to quote some of them and also remind the House the work that they have done, sir. Sir, Srimati Sarojini Naidu was one of them, and she promoted the importance of national identity symbolized in the national flag. Sir, Begum Qudsiya Ejaz Rasulji, who strongly opposed communal reservations, sir, but she advocated minority education. Srimati Amu Swaminathan, which one of the colleagues had just mentioned, who was fondly called Mukuti, who spoke on the economic issues and the problems of women workers. Hansa Jivraj Mehta, who advocated fundamental rights and rights for women too. Here, sir, I would like to quote I would like to quote Hansa Jivraj Mehta ji on two important issues, her interventions on two important issues. One was on the Parda system and the second was on the Uniform Civil Code. Sir, on the Parda system, she said, and I quote, "It is an inhuman custom which still exists in parts of India. Unfortunately, we were told that raising this question will hurt the religious susceptibilities of some people. As far as the Hindu religion is concerned, it does not enjoin Parda. Islam does. But I feel that Islam will be better rid of this evil. Any evil practiced in the name of religion cannot be guaranteed in the Constitution." This is what she observed about the Parda system. Sir, on the Uniform Common Civil Code, she said, and I quote, "The other item to which I wish to draw the attention of the House is the Common Civil Code. To my mind, this is much more important than even the national language. We have too many personal laws in this country, and these personal laws are dividing the nation today. It is therefore very essential, if we want to build up one nation, to have one civil code. It must, however, be remembered that the civil code that we wish to have must be on par with or in advance of the most progressive of the personal laws in the country. Otherwise, it would be a retrograde step and it will not be acceptable to all." Sir, Srimati Vijayalakshmi Pandit ji, who emphasized India's role in protecting global peace. We had Rajkumari Amrit Kaur ji, who supported extensively the women political participation. Srimati Sucheta Kribalani, who emphasized the need for ensuring political rights for women. Srimati Renuka Ray, who intervened on women rights issues. Srimati Leela Roy, who was deeply committed to gender equality. Srimati Purnima Banerjee, who vehemently argued that power should lie with the people. Srimati Annie Mascarene, who strongly argued for democratic reforms, considering that to be vital for a strong India. Srimati Dakshayani Velayudan, the only Dalit woman, as was mentioned earlier, sir, the only Dalit woman in the Constituent Assembly, who fought vociferously for doing away with the untouchability and also equal opportunities to all. Srimati Kamala Chaudhary, who was committed to rural development. Srimati Dattabai Deshmukh, we all know, she was instrumental in setting up family courts in the country. And Srimati Malti Chaudhary, who advocated land reform, social justice and rural welfare policies to the women in rural India.
Sir, these remarkable women have left an indelible mark on the Constitution of India. And it is living up to this spirit of the Constitution, sir, and being inspired by the work done by, as somebody had mentioned earlier, the mothers of the Constitution. Shri Narendra Modi ji has defined a new India's growth story, wherein it is no longer women development, but rather women-led development, sir. Today, women in our country would no longer be passive recipients of the benefits of certain schemes, but rather to promote women-led development, sir, our focus should be on nutrition, health and education, which is exactly what the Narendra Modi ji-led government is doing today. So the direct benefit transfer scheme under the Matrutva Vandana Matrutva Surakshit Yojana has today resulted in healthy mothers giving birth to healthy children and thereby a healthy nation. Access to sanitation, sir, has improved the health of the women in the country. Sukanya Samriddhi Yojana and Beti Bachao Beti Padhao have actually facilitated girl-child education. Financial inclusion for women today, sir, in the country has been facilitated through the Jan Dhan Yojana. The maternal benefit bill, which has sought to extend the paid maternity leave for women from 12 weeks to 26 weeks, has ensured that the children of our country do get the mother's care. And the Namo drone Didi has empowered our women farmers in rural India, and the microfinance that we are actually facilitating for the women in our country has converted them into entrepreneurs under the Stand Up India scheme, sir. Sir, here I would be failing if I do not mention the Nari Shakti Adhiniyam, which provides for 33% reservation for women in Parliament as well as in the Assembly. Sir, this is simply not a facilitation of women coming forward, but we must understand and realize that this actually gives an opportunity to an entire dormant talent pool to come forward and take on the leadership role, in our country. And these interventions by the Narendra Modi-led government has metamorphosized women to become leaders and key contributors to the India's growing story, sir. Sir, this only reflects the fact that our Constitution continues to shape the Indian governance as well, as it has been enshrined in the Constitution. And Article 38 reads, sir, the state is required to promote the welfare of the people by ensuring a social order that is just, social, economic and political. However, sir, the evolution of our Constitution has not been without challenges, and this would also mean the challenges that the framers of a Constitution had faced, even when they had to ensure the security and welfare of the millions of people who were displaced during the partition. But yet, sir, amidst all the violence and the uncertainty of the day, the framers of our Constitution had met meticulously and religiously, and they have successfully given us a Constitution to a country of exceptional diversity. Sir, here Baba Saheb Ambedkar ji was a little apprehensive about the success of our Constitution when he said, and I quote, "Indeed, if I may say so, if things go wrong under the new Constitution, the reason will not be that we had a bad Constitution. What we will have to say is that man was vile." And sir, his words have come true. Our Constitution has been amended 106 times since 1950, sir. And even as tall leaders have accepted various responsibilities when the Constitution was being framed. Like, for example, late Shri Babu Rajendra Prasad ji, he had kept the records. Baba Saheb Ambedkar ji, he had chaired the drafting committee. The Iron Man of our country, Sardar Vallabhbhai Patel, he took it on himself to actually bring a consensus among the minorities and the other communities in our country. At this juncture, sir, it is very important to recall the observations of Shri Jawaharlal Nehru ji when he said, while we make a constitution which is sound,
and as basic as we can. It should also be flexible, and for a period, we should be in a position to change it with relative flexibility. Sir, at that point of a time, it might have sounded very innocently apt, but the irony is, just about a year and a half after the Constitution was adopted in 1950, on the 18th of August 1951, the first draconian amendment was made to the Constitution, sir, and that too to Article 19(1)(a) of the Constitution, wherein freedom of expression, which was guaranteed under this article, was actually curtailed and curbed. So this move was bitterly opposed by Sri Shyama Prasad Mukherjee ji when he said, "You are treating this constitution as a scrap of paper." Sir, a preamble was not spared. Many of my colleagues had actually spoken about it when the words socialist and secular was introduced into a preamble, and Baba Saheb Ambedkar ji had vehemently said that socialists should not be added in the preamble at that point of a time, because no one typical governance style should be imposed upon the citizens of our country. Of course, sir, the emergency of 1975-77 is a stark reminder of the violation of the provisions of the Constitution and an encroachment on the fundamental rights of the citizen of our country. Since the adoption of our Constitution, sir, the Union government had dismissed democratically elected governments 134 times, largely during when the principal opposition party was in power. And the first time, sir, again I would like to emphasize on the word ironically, because it was on the 20th of June 1951 that Article 356 was imposed in Punjab too. Sir, Article 356 actually vests wide powers in the central government to stamp its authority on the state governments. See, though this article at that point of a time was meant to preserve the integrity and the unity of our country, it has been blatantly used to oust democratically elected governments that were led by opponent parties. So this article, sir, was borrowed from the Government of India Act of 1935. Ironically, sir, that the leaders of the freedom struggle had opposed the invocation of Article 93 from the Government of India's Act of 1935. But later on, and the Britishers did not invoke it as well, but later on, sir, it had found its way into our Constitution, and the reason why it was incorporated was to ensure stability in a post-independent country. Sir, Baba Saheb Ambedkar ji had called this article a dead letter, but this article has been misused a majority of times. Here I cannot refrain, sir, from recalling the experience of my late father, Shri N.T. Ramarao ji, when he was undemocratically ousted out of power, when Srimati Indira Gandhi ji was the Prime Minister of the country. But it is thanks to the principal party in the NDA government today, the BJP, and the love and affection of the people of the state of Andhra Pradesh that has actually seen him reinstalled in the state of Andhra Pradesh, sir. Sir, it would be permanent. It would be pertinent. Yes, and many other parties too. Sorry. Sir, it would be pertinent, sir, here to recall the comments from the editorial of The Economist. And The Economist, in its editorial, had written, "A ruler who regards his opponents as demons is liable to start behaving like one." Again, sir, a ruler who regards opponents as demons is liable to start behaving like one. Mr. Nixon, 10 years out of American presidency, has yet to say sorry. Mrs. Gandhi, 4 years back in power in India, is into her dirty tricks again. This is what Economist said, sir. It is not what I had said. Sir, to conclude, the Constitution of India is not simply a compilation of schedules and articles, sir. Neither does it simply seek to establish institutions, but it is rather a transformative one. The various provisions in our Constitution seek to ensure social and economic justice to all the citizens of our country. Today, rising above all political considerations and ideologies, it is our bounden duty to pay respect to the 75 years journey of our Constitution. So the interpretation of our Constitution has been shaped
by interventions of various sections of society, and we cannot leave the judiciary far behind. Our judiciary too, sir, has been a part of this evolution journey, wherein when it was necessary, they had worked closely with governments, but when it was so desired, they did not hesitate, the judiciary did not hesitate from striking down laws, policies, and at the same time amendments too, to uphold the basic structure of our constitution. Sir, when our constitution was being framed, the framers of our constitution were both men, women, leaders from different parties, leaders belonging to various ideologies, from different caste, creed and backgrounds, sir. So today, sir, we can never say that the constitution belongs to any one particular person, party or ideology. This constitution belongs to India, and this is what is very, very inspiring, sir. Sir, the oldest and the longest constitution of the world today, it seeks to realize the dream of every Indian citizen, sir. And that dream, if I were to put it in the words of poet Iqbal, is to realize a country which is Sare Jahan se Acha, Hindustan Hamara. Jai Hind, sir. Thank you, ma'am. माननीय श्री इकरा चौधरी जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस विशेष चर्चा पर बोलने का मौका दिया। भारत के संविधान के 75वें वर्ष की चर्चा के मौके पर मैं सबसे पहले संविधान बनाने वालों की दूरदृष्टि को सलाम करती हूं। एक युवा सांसद के तौर पर मैं अपनी उम्मीदों को संविधान के साथ जोड़कर खास तौर पर ये बताना चाहती हूं कि आज हमारे देश में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय को इस तरह अपने संवैधानिक अधिकारों और आजादियों की हिफाजत के लिए हर रोज मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के कथन से अपनी बात रखना चाहती हूं। उन्होंने कहा था, मुझे अपने भारतवर्ष पर फक्र है कि जिसके पास ऐसा संविधान है जो लोकतंत्र, समाजवाद और सेक्युलरिज्म को संजोता है। लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे संविधान की किताब तो है, पर इसे चलाने वालों का ईमान गुम हो गया है। आज हिंदुस्तान में हर वर्ग को किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, मगर अल्पसंख्यक, खासतौर पर मुसलमानों पर जो कहर टूटा है वो किसी से छुपा नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने मजहबी पहचान की वजह से निशाने पर हैं। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या किसी और वजह से भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत इसके उलट है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर द्वारा घरों को गिराने की घटनाएं आम हो गई हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां ऐसा लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। संभल में जो हुआ वो सबके सामने है। पुलिस के संरक्षण में निर्दोष लोगों की हत्या की गई और सरकार ने चुप्पी साध ली। अल्पसंख्यकों पर हिंसा बढ़ती जा रही है, मगर सत्ता में बैठे लोग या तो आंखें मूंदे हुए हैं या फिर इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब न्यायपालिका की बात भी अनसुनी कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग पर 11 सूत्रीय निर्देश जारी किए थे। इसमें साफ कहा गया था कि राज्य सरकारें और पुलिस इस तरह की घटनाओं को रोकने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन आज भी इन निर्देशों पर अमल नहीं हो रहा है। हाल ये है कि मॉब लिंचिंग को रोकने की बजाय सत्ता में बैठे लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उनकी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं जो नफरत को और बढ़ावा देती है। ये अशांति अब इतनी गहराई तक फैल चुकी है कि हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। साल की शुरुआत में ही कई राज्यों में दुकानदारों को अपने नाम बोर्ड पर लगाने के लिए मजबूर किया गया। इसे सेहत और सुरक्षा के कानूनों का हिस्सा बताया गया, मगर असल मंशा कुछ और थी। ये कदम खास तौर पर मुसलमान दुकानदारों को निशाना बनाकर उठाया गया ताकि उनकी रोजी रोटी पर चोट की जाए। पिछले हफ्ते मुरादाबाद में एक मुस्लिम डॉक्टर को हिंदू बहुल्य मोहल्ले में घर खरीदने पर विरोध झेलना पड़ा। वजह बताई गई, इससे मोहल्ले की सामाजिक शांति बिगड़ जाएगी। अब आप ही बताइए, क्या ये वजह सही है, जायज है? असल में ये छोटी बड़ी घटना इस बात का सबूत है
कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले बयान और नीतियां हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रही है। उत्तर प्रदेश में यति नरसिंहन ने बेहद घटिया बयान दिया, लेकिन सरकार इन बयानों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हेट स्पीच न केवल जनमानस के विचारों को प्रदूषित करती है, बल्कि इससे अब संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी प्रभावित कर दिया है। अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के माननीय न्यायाधीश ने ऐसे बयान दिए जिसका संज्ञान खुद सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 ने अल्पसंख्यकों को उनके मजहबी और सांस्कृतिक हक दिए हैं ताकि वो अपनी पहचान को बचा सके और अपने संस्थान चला सके, लेकिन आज उन्हीं हकों पर हर तरफ से चोट की जा रही है। वक्फ जैसे बिल लाकर उनके धार्मिक अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है। आज अल्पसंख्यक समुदाय को संविधान द्वारा दिए गए अपने बुनियादी अधिकार पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ऐसे कई मामले अदालत ने न्याय देकर संविधान की रक्षा की है, लेकिन अदालती प्रक्रिया में जो समय लगता है उसकी वजह से देश के सामाजिक ताने बाने को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2004 के मदरसा एक्ट को रद्द कर दिया था, जिससे मदरसों के संचालन पर सवाल उठे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस फैसले को पलट दिया और एक्ट को वैध करार दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में जो समय लगा उसने अल्पसंख्यकों को बेचैनी और संघर्ष के दौर में डाला है। इसी कड़ी में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 भी आता है और कई अन्य अधिकार, उन्हें भी इसी तरह अदालती लड़ाइयों में उलझाया जा रहा है। ये स्थिति न केवल अल्पसंख्यकों के अधिकारों की राह में रुकावट है, बल्कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड जैसी कहावत को सिद्ध करती है। मैं इस सदन से दुनिया भर के अल्पसंख्यकों की आवाज उठाना चाहती हूँ, खास तौर पर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है वे दिल को गहरे तक चोट पहुंचाने वाला है। उनकी जान माल की हत्या की जा रही है। बांग्लादेश हो या हिंदुस्तान हो या कोई और देश, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, इज्जत और अधिकारों की हिफाजत हर सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं इस सदन से अपने देश के अल्पसंख्यकों के साथ बांग्लादेश के पीड़ित अल्पसंख्यकों की आवाज को एक साथ उठाना चाहती हूँ। ये वक्त की पुकार है कि हम सब मिलकर सुनिश्चित करें कि किसी भी इंसान को उसकी पहचान या मजहब के कारण डरकर जीने पर मजबूर ना होना पड़े। जहां हक छीने जाते हैं वहां अमन खो जाता है। ये बात हर सरकार को समझनी चाहिए। अगर हम सच में अपने संविधान का सम्मान करना चाहते हैं तो हमें नफरत और भेदभाव को खत्म करना होगा। हमें ये दिखाना होगा कि ये मुल्क हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म और हर समुदाय का है, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक संविधान की आत्मा सिसकती रहेगी। सर, अपनी बात को खत्म करते हुए मैं एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। लेकिन अगर इस सदन में बैठे हम सभी सदस्य ये ठान ले कि हमें संविधान के मूल्यों को लागू करना है और उसे लागू करने का प्रयास करें, तो वह सुबह जरूर आएगी जिसके लिए लाखों भारतवासियों ने अपने जानों की कुर्बानी दी थी। श्री हनुमान बेनीवाल जी। धन्यवाद सभापति जी। आज सदन में भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा हो रही है। सभापति जी, सदन के साथी विद्वान सदस्यों ने पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से, और खुशी की बात यह भी है कि 7 घंटे से अलग अलग विचार आए,